Hello aspirants, welcome back to another lecture of Indian Polity series where we will be discussing about the part 2 of Indian Constitution named Citizenship. It covers articles from 5 to 11. In this video, we will understand the difference between citizen and alien, acquisition and loss of citizenship, Citizenship Amendment Act, and the comparison among NRI, PIO, and OCI. As usual, without wasting any more time, let let's begin our discussion. Dear friends, आज हम जानिबा जे सिटीजनशिप कोन एक्चुअली सिटीजनशिप ता कोन जे सिटीजनशिप को जे देखियो तार लिटरल मीनिंग ताको हम नागरिकता कहबा नागरिकता ए जो सिटीजनशिप बा नागरिकता कोन आकु जदि भल से बुझिया को चेष्टा करिया प्रथम जिंस हम जानिबा जे प्रत्येक कंट्री था प्रत्येक कंट्री रे से कंट्री मानकर अलिजियंस बा आनुगत्य स्वीकार करथुवा किछि लोक मानकु से माने डिसाइड करथनि बा केउ लोक मानकु से माने सिटीजनशिप देबे सेही देशर जो सार्वभौम सिविल ताउ पॉलिटिकल राइट्स गुडा प्रोवाइड करे से कंट्री डिसाइड करथाय तनु प्रत्येक कंट्री निजर अकॉर्डिंगली लोक मानकु सिटीजनशिप प्रोवाइड करथाय ता सहित मध्य से माने जे लोक मानकु पसंद करंती नाही बा जे लोक माने जो लोक माने से एंटी नेशनल एक्टिविटी मध्य करथांती सेमानकु बेले बेले मध्य सिटीजनशिप रु सेमानकु एबोलिश कराय था बा सेमानकु मध्य बॉयकॉट कराय था तनु करी प्रथम जिंस देखिया प्रत्येक कंट्री अनुसार सेमानकर सिटीजनशिप डिफरेंट हेताय फॉर एग्जांपल यूएस रो सिटीजनशिप यूके रो सिटीजनशिप इंडिया रो सिटीजनशिप समस्तनकर सिटीजनशिप रो क्राइटेरिया अलग अलग है तेणु प्रत्येक कंट्री सेमानकर सुइटेबिलिटी अनुसार से लोक मान सिटीजनशिप प्रोवाइड करता ये तो आम जानले सिटीजनशिप कौन जो देखिए सिटीजनशिप कोडी लोकेटेड अछि सिटीजनशिप लोकेटेड इन द पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जो 25 पार्ट्स वर्तमान रही छी तार पार्ट नंबर 2 रे ये लोकेटेड अछि और आर्टिकल कोड को भीतर रेंज होई अछि 5 to 11 भितर रही वर्तमान हम जानिबा बेसिक कांसेप्ट बिटवीन सिटीजन एंड एलियंस ताले वर्तमान कंपैरिजन जानिबा जे हमें सिटीजन किए और एलियन किए जदि सिटीजन मानक कथा देखिबा हमें सिटीजन किए काहू कहबा हमें सिटीजन्स आर द फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट जदि इंडियन सिटीजनशिप कथा कहबा ताल से माने इंडियन स्टेट रो फुल मेंबर सहितबा आवश्यक ता सहित एंड वे अलिजियंस टू इट ता माने से लोक माने जो मन की फुल मेंबर भाबे डिक्लेयर हिचंती एवं सेमानकर आम कंट्री प्रति अनुगत्य अछि अनुगत्य अलिजियंस मींस होछि अनुगत्य बा ट्रस्ट विश्वास रहइबो अनुगत्य जो मानकर अनुगत्य बा विश्वास रहिछि से कंट्री प्रति सेमानकु आम गोटे फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट बा सिटीजन भाबे डिक्लेयर करिवा जदि जने सिटीजन हे गला ताल सेमानकु कोन मिलियो they enjoy all civil and political rights this is very important कहीं की माने जो माने की गोटे फुल मेंबर नुहंती बा जो माने सिटीजन नुहंती सेमानकु अदर राइट्स मिले जेमिति की जने फॉरेनर को मध्ये किछि राइट्स मिलता है किंतु किंतु जो सब जाक पॉलिटिकल और सिविल राइट्स गुडा को इंडियन सिटीजन में लागू होता है ता सहित कोन सिटीजन आर आल्सो ओए सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट कौन सी गोटे सिटीजन को निजर कंट्री प्रति किछि ड्यूटीज रही थाए जो गुडा को मध्ये हमें फंडामेंटल ड्यूटीज कहबा जदि इंडिया रा कौन सी गोटे लोक नागरिक हे गला बा सिटीजन हे गला ता माने तार किछि ड्यूटीज मध्ये रही छि टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट जेमिति कि इंडियन स्टेट को प्रोटेक्ट करबा इंडियन फ्लैग्स को बा नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करबा एभले किछि ड्यूटीज मध्ये रही छि जोड़ा कि फॉरेनर्स मानक पई बा जोड़ा कि एलियंस मानक पई लागू होए नाही ता सहित एमिति मध्ये आउ किछि जिंस मध्ये रहछि जेमि पेइंग टैक्सेस नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करिया डिफेंड आवर कंट्री हम कंट्री मध्ये डिफेंड करिया एभले किछि जिंस रहछि ताले सेमान को हमें सिटीजन कहिबा ताले एलियन का कहबा देखियो यदि एलियन का कहबा देखिवा एलियन आर द सिटीजन ऑफ some other state or country
माने से माने आम कंट्री रो सिटीजन नुहंती सेमन को एलियन कहबा सपोज कि गोटे यूके रो कि गोटे लोक आसे इंडिया को विजिट करिया पे तामें ताको हमें एलियन भाबे डिक्लेयर करिया बेसिकली एलियन टर्म टा हमें यूज करू आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड पाई किंतु एक्चुअली in the on the basis of the political terms aliens are those people who belong to another country so माने कि अन्य कौन छोटे कंट्री को बिलोंग करते से को alien कहबा they don't enjoy all the civil and political rights ई जगह लगी all the civil and political rights तार अर्थ होची सेमान को किछि मध्य political civil rights किछि मात्रा प्रोवाइड करा जाय but they don't enjoy all the civil and political rights सेमान को दुई प्रकार कैटेगरी हम कहि पारे some are the friendly aliens and some are enemy aliens जो मैंने फ्रेंडली एलियंस था से भितर कोडियल रिलेशन थाए इंडिया सहित जमीती हम कहि परिया जदी हमर रशिया जे देखिबा रशिया सहित इंडिया रो गोटे फ्रेंडली टाई अछि तनुकरी सपोज रशिया रो कोनोसी गोटे लोक आसिला इंडिया को विजिट करबे ताहाल तांको हम फ्रेंडली एलियन भाबे ट्रीट करिया से वाला जे एनिमी एलियन के जदी कोनोसी गोटे कंट्री सहित वार हिची बा कौन गोटे मिस एग्रीमेंट हिची बा कौन समय रे मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हिची ताहले सेमानको हमें एनिमी एलियंस भाबे डिक्लेयर करू ताहले क्वेश्चन आसे जे ए एलियन तो एलियन ए भला जो कैटेगराइजेशन काहे की रहिची ता रीजन होची फ्रेंडली एलियंस मानको हमें किछि अधिक प्रायोरिटी दो मोर प्रायोरिटीज प्रोवाइड करा जाए देन द एनिमी एलियंस माने एनिमी एलियंस मानकर जो राइट्स गुडा को ताकू टिके हमें रेस्ट्रिक्ट कर दू बा ताकू कम राइट्स प्रोवाइड करू एज कंपेयर टू द फ्रेंडली एलियंस तल राइट टू एलियंस कोन दिया हिचे और राइट टू सिटीजन्स मानु कोन दिया हिचे से जिंस विषय हम डिस्कशन वर्तमान हम जानि चललेनी जे सिटीजन काहू कहबा एलियन काहू कहबा वर्तमान देखिबा जे सिटीजन मानकर राइट्स कोन देखिबा सिटीजन मानू कौन कौन राइट्स प्रोवाइड करा देखिबा सिटीजन मानू बहुत गुड फंडामेंटल राइट्स देछि आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ प्रत्येक लोकन को सेमान को रेस बा जोटा कि हम को स्किन कलर कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ आहार बेसिस रे कौन लोक को हम केबे डिस्क्रिमिनेट करिवा नहीं आर्टिकल 16 रो अकॉर्डिंगली समस्त को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलिबो आर्टिकल 19 अनुसार समस्त को फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट करिया पे मध्यम मिलछि टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री रेसिडेंस रो अर्थ होची जे कोनसी पार्ट रे सपोज मु ओडिसा रो ता माने मु चाहिले मध्ये कोनसी गोटे अदर स्टेट रे मध्ये मु रही परिबी एंड इंडियन सिटीजन हैव द राइट टू चूज एनी प्रोफेशन तो एटा आर्टिकल 19 अनुसार समस्त फ्रीडम मिलछि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली एसोसिएशन फ्रीडम टू लॉन्च मूवमेंट फ्रीडम टू स्टे एनी अदर प्लेसेस and freedom to profess any profession and article 29 and 30 cultural and educational rights गुडा को मध्यम मिलछि ता सहित अदर राइट्स मध्यम मिलछि कोन राइट टू वोट इन इलेक्शन वोटिंग राइट्स मन को मिलछि इलेक्शन जेमिति लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन में जोटा कि एलियंस मानक पे रेस्ट्रिक्ट करा है माने से माने वोट दे परिए नाही ता सहित राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट जने एमपी हेबा पे जदी इलिजिबल थाए से कंटेस्ट करे पे मध्ये से परमिशन मिलछि ता सहित स्टेट लेजिस्लेचर रे मध्ये पार्टिसिपेशन करिया पे से पर्याप्त परिमाण रो सुযোগ रहिछि एलिजिबल टू होल्ड सर्टेन ऑफ पब्लिक ऑफिसेस माने जदी जने इंडियन सिटीजन हेतियो ताहाले ते इंडिया रो जो बड़ बड़ पब्लिक ऑफिसेस काहू कहबा जो ऑफिसेस गुडा को टोटल पब्लिक मान को वेलफेयर पाई ही काम करथांती और से अकाउंटेबिलिटी थाए कहा करे पब्लिक मान को आगे से मान को हमें पब्लिक ऑफिसर्स कहबा और से ऑफिस को पब्लिक ऑफिस कहबा लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
judges of the Supreme Court and High Court, governors of the state, attorney general, advocate general, generals of the state, CAG, control auditor general. So এই places गुड़ाको आमे ए places गुड़ाकरे Indian citizen माने ही रहिबे और अन्य मानकर बा एलियन मानक पई एठारे कोनोसी सुजोग न थाए. नेक्स्ट देखिया व्हाट आर द राइट्स गिवन टू द एलियंस. एलियंस मानक पई कोन राइट्स अछि. राइट टू एलियंस सेमानकु राइट बहुत लिमिटेड राइट्स देहिछि जो एलियंस मानकु देहिछि. आर्टिकल 15 16 19 29 30 आकु छाड़ी की ऑल अदर राइट्स एई राइट गुडा को इंडियन सिटीजन मानक पई ही ग्रांट कराय था. आकु छाड़ी की अदर राइट गुडा को सेमान को मिल थाए. ता सहित एनिमी एलियंस मानक जे देखिबा सेमानु दे डोंट इंजर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22. फ्रेंडली एलियन मानक पई तो आर्टिकल 22 रहिछि सेमान को दे इंजे आर्टिकल नंबर 22 सेमान को मध्ये मिलछि. किंतु एनिमी एलियंस मानक पई जो प्रोटेक्शन राइट अगेंस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट और डिटेंशन सेटा सेमान को मिल रहे माने सेमान को जदि सेमान को कोनोसी एक्शन में सेमान को अरेस्ट मध्ये कर जाई पारे. ये तो थला. वर्तमान देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स नोट कौन इंपोर्टेंट पॉइंट्स रही देखिबा. In India, both is citizen by birth as well as naturalized citizens are eligible for the office of president. Office of president पाई both citizen by birth जो माने कि जन्म रु ही इंडियन सिटीजन as well as naturalized citizen बा कौनसी गोटे प्राकृतिक वे रे से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करथिबो ताहाले समान को हमें प्रेसिडेंट रो ऑफिस पे समाने योग्य विवेचित हेबे. इन द यूएसए कोन ओनली ए सिटीजन बाय बर्थ जो माने कि सिटीजन बाय बर्थ जो माने कि अमेरिका रे ही जन्म होई चंती सेमाने को ही सेमानकर प्रेसिडेंट पद पाई इलिजिबल करा जाय. नॉट ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन माने कोनसी गोटे जदि कहबा कोनसी गोटे डिफरेंट ओरिजिन सपोज कहबी मु गोटे इंडियन ओरिजिन न कोनसी लोको सेट रही कि अमेरिका रो सिटीजनशिप एक्वायर करछि दैट मींस he is not permitted to be in the office of the president मान ताकू परमिशन दिया जीवन जैसे प्रेसिडेंट हबा पे. किंतु इंडिया रे बोथ बाय बर्थ और नेचुरलाइज्ड सिटीजन से बाय बर्थ रे सिटीजन हो किंबा कोनसी डिफरेंट वे रे सिटीजनशिप जदी एक्वायर करछि ताहाले से प्रेसिडेंट हबा पे जोग्य. मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैज amended the foreign tribunals order 1964 and has empowered district magistrates in all states and union territories to set up tribunals जोटा हम कहू मते quasi judicial bodies to decide whether a person staying illegally in India is a foreigner or not. ताहले कोनसी गोटे लोको इंडिया रे जदी आसिके रहुची कोनसी गोटे डिफरेंट कंट्री लोको ताहले ताकू गोटे फॉरेनर किंबा इंडियन सिटीजन भाबे ताकू डिक्लेयर करियारो दायित्व को मान को मिलिची. जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था जो कलेक्टर मान थांदी समान को राइट्स मिलची. काहा ठार राइट्स मिलची फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएसए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स बा होम मिनिस्ट्री तक मिलची दायित्व काहा अंडर रे द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 रो अकॉर्डिंगली समस्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मान को राइट्स मिलची जे से माने गोटे पर्सन को डिक्लेयर करेबे एज ए फॉरेनर और नॉट. नेक्स्ट देखबा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप. कौन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रही प्रोविजंस माने बेसिकली दोज आर रिलेटेड टू द आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2 हम जानते ऑलरेडी डिस्कशन कर सकते. It contains neither any permanent nor any elaborate provisions in this regard. It only identifies the person who becomes citizen of India at the time of its commencement. ता माने इंडिया रे जते बेले की कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हैला बाय इंप्लीमेंट हैला ऑन द डे ऑफ 26 जनवरी 1950 छोटा का में रिपब्लिक डे भाबे सेलिब्रेट करछे सेही दिन थारु बतार पूर्वरु को मान को सिटीजनशिप प्रोवाइड करा गला सेमानकर केवल जस्टिफिकेशन ए जगह रही
तेणुक आर्टिकल गोटे बहुत न्यारो जिनस यहाँ 5 to 11 भितर ये लाए कर आर्टिकल आउ को मान को सिटीजनशिप मिल को मान को मिलबनी एते ही डिफाइन कर इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट टू इनैक्ट लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर्स ता माने एई जिनसटा जो सिटीजनशिप प्रोवाइड करियारो दायित्व ये केवल पार्लियामेंट हाथ इंडियन पार्लियामेंट जोटे लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट एमान हाथ में ही रही से डिसाइड करे whether a person belongs to India or not से गोटे इंडिया को बिलोंग करछि कि नो ताकू रिलेट करे से मैटर गोटे पार्लियामेंट को दायित्व जाय तापर जो देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1950 1955 and citizenship act 1955 provides for the acquisition and loss of citizenship जोटा कि हमें आगु को डिस्कशन करिया सिटीजनशिप केमिति एक्वायर करा जिवो केमिति हासिल करा जिवो आ केमिति जने लोक निजर सिटीजनशिप लॉस करिवो ए जिंस गुडा को मध्य इथरे मेंशन करा जाय वर्तमान किछि स्पेसिफिक आर्टिकल्स देखिबा आर्टिकल्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप आर्टिकल नंबर 5 says that citizenship at the time of commencement of the citizen so आर्टिकल नंबर 5 रे से ग्रांट करा जे सिटीजनशिप मिलिबो कोडे एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तयारी समय रे ही डिक्लेयर करा जिवो जे कौनसी ता पूर्व ही जजमेंट दिया जिवो जे से लोकटा इंडिया रो सिटीजन हेबा पई लायबल कि नुह आर्टिकल नंबर 6 says that citizenship of those who migrated from Pakistan to India माने आर्टिकल नंबर 6 अंडर रे जने लोक जदि पाकिस्तान नु माइग्रेट करी इंडिया को आसी पाकिस्तान टू इंडिया ताहाले तार सिटीजनशिप को बळे रहबा दरकार से जिंस गुडा एठारे डिक्लेयर कराय आर्टिकल नंबर 7 says that citizenship of those who migrated to Pakistan and then came back to India ता माने किछ लोक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन टाइम रे से माने इंडिया रो पाकिस्तान जाइथिले से माने इंडिया रो पाकिस्तान गले एंड अगेन रिटर्न बैक फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया ताले सेमानकर को भलिया सिटीजनशिप प्रोवाइड करा हो ता विषय रे आर्टिकल नंबर 7 ने मेंशन रही आर्टिकल नंबर 8 says that citizenship of person of Indian origin PIO जोटा कहउछ हमें इंडियन ओरिजिन कोन छोटे इंडियन ओरिजिन रो लोकर तार सिटीजनशिप केमिति रहिबा दरकार से आर्टिकल नंबर 8 को है आर्टिकल नंबर 9 says that टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप जदि कौन सी गोटे लोक जदि अदर कंट्री रो सिटीजनशिप एक्वायर कला ताल तार ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप कैंसिल हो जाय दिस सेज आर्टिकल नंबर 9 आर्टिकल नंबर 10 says that continuance of rights of citizenship से कहछि लोक मानकर सिटीजनशिप राइट ता कंटिन्यू हेके रहिबो जदि से माने एमिति कोनसी डिफरेंट कंट्री रो सिटीजनशिप एक्वायर करना हंती बा निज इच्छा रे से माने अप्लाई करना हंती टर्मिनेशन पे निजर सिटीजनशिप ताहाले से मानकर राइट ऑफ सिटीजनशिप कंटिन्यू रहिबो ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 10 आर्टिकल नंबर 11 says that parliament to regulate the right of citizenship by law पार्लियामेंट कोन करिवो बाय लॉ अनुसार बा लॉ द्वारा लोक मानकर सिटीजनशिप को से रेगुलेट करिवो पार्लियामेंट shall have the power to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship माने सिटीजनशिप मैटर रे सिटीजनशिप मैटर रे the supreme governing body is the parliament माने पार्लियामेंट पकरे जो सोवरेन पावर रहिछि से चाहिले सिटीजनशिप को अमेंड करि परियो सिटीजनशिप रो परिभाषा को मध्ये चेंज करि परियो ता सहित काहार सिटीजनशिप रहिबो आ काहार सिटीजनशिप टर्मिनेट होबो काहा को नुवा सिटीजनशिप प्रोवाइड करा जो ए सब जाको पार्लियामेंट हाथ रे पावर दिया गला एति थिला हमरो आर्टिकल्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप वर्तमान देखिबा एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप जने सिटीजनशिप केमिति एक्वायर करियो से विषय हमें जानिबा बहुत गुड एस्पेक्ट रहिछि फॉर द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप गोटे गोटे डिस्कशन करिया खाली ओवरलुक कर दवा जे को बेसिस रे जने सिटीजनशिप एक्वायर करि पारे प्रथम जिंस जे बाय बर्थ दिस इज पॉइंट नंबर 1 बाय बर्थ माने जदी इंडिया रे जने जन्म हला ताले इंडियन सिटीजनशिप मिले बाय डिसेंट जदी से आउटसाइड रे जन्म होईची किंतु इंडिया को आसला किंतु को तार टाइम लाइन अछि सेटा को हम डिस्कशन करिया तार बाय रजिस्ट्रेशन से जदी इंडियन गवर्नमेंट सहित आसी कि गोटे एप्लीकेशन देकी गोटे फॉर्मल एप्लीकेशन माध्यम रे रजिस्ट्रेशन कला ताहल तक मध्ये सिटीजनशिप दिया जाय पारे बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस रे मध्ये
ताको मध्ये सिटीजनशिप दिया जाय पारे बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी जदि इंडिया रे किछि से जगह किनला बा किछि स्थान एक्वायर करिकि से जदि किछि प्लेसेस गुडा एक्वायर करिकि इंडिया रहया पे ट्राई कला ताहाले मध्ये ताको इंडियन सिटीजनशिप मध्ये प्रोवाइड करा जी द फर्स्ट थिंग जानिबा हमें बाय बर्थ ए पर्सन बोर्न इन इंडिया ताले ता पे क्राइटेरिया कोन बाय बर्थ पे बिटवीन जनवरी 26 1950 टू 1st जुलाई 1987 एट डेट लाइन रछि 26 जनवरी 1950 रु 1st जुलाई 1987 भितरे इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स जो माने लोक माने होंतु मध्य एतिकी टाइम लाइन भितरे जदि इंडिया रे आसी माने जन्म होइछले आ इंडिया रे रहि जाइछले ताले सेमानु सिटीजनशिप दिया जिवो तापरे आफ्टर जुलाई 1st 1987 जुलाई 1st 1987 पर either of his parents is a citizen आ जदि आ पर से जन्म होला तार पेरेंट्स जदि इंडियन सिटीजन थिबे ताहाले सेमानकु इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करा डिसेंबर 3rd 2004 डिसेंबर 3rd 2004 onwards only if both or one of whose parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant at the time of her birth जदि जदि जने लोक जन्म होउची 2004 डिसेंबर 3 2004 onward मान ता परवर्ती समय रे आ तार either of one of the parents जदि से मन उभय इंडियन सिटीजन हिते ता पेरेंट्स माने जदि both are इंडियन सिटीजन both सिटीजन थिबे किंबा जने से मानो one of them is इंडियन सिटीजन ता सहित सपोज एटी दिटा क्राइटेरिया सपोज जन मदर और फादर आको भीतर तांगर चाइल्ड तेरेला जदि चाइल्ड को सेते बेले जदि ये चाइल्ड ता 2004 डिसेंबर 3 पर जदि जन्म हिची ताहले आको को ग्राउंड रे इंडियन सिटीजनशिप मिलिबो एइदर तार मदर नहले फादर बोथ इंडियन सिटीजन हितिबे नहले समान भीतर जण हितिबे जदि जण हितिबो तेबे अन्य जणे इल्लीगल माइग्रेंट जेमिति हेनथि इल्लीगल इमिग्रेंट्स जेमिति इल्लीगल इमिग्रेंट्स हेइ नथि माने तार लीगल किछि पासपोर्ट हो कोनसी डॉक्यूमेंट्स आधार से जदि इंडिया रे डिसाइड करथो ताहाले ताकू सिटीजनशिप दिबो इटा वेरी इंपोर्टेंट the children of foreign diplomats posted in India and enemy alliance cannot acquire Indian citizenship by birth इट को ग्राउंड रे आ गुटे जिंस रहले जो फॉरेन डिप्लोमेट्स जोटे फॉरेन हाई कमिश्नर को जाय मध्य से माने जदि इंडिया रे पोस्टेड हैला तांकर जदि कोनसी चाइल्ड इंडिया रे बॉर्न होला ता सहित एनिमी एलियंस मानकर जदि कोनसी जोटे चाइल्ड जदि इंडिया रे जन्म होला ताहाले समान सिटीजनशिप मिलिबो नाही तो बाय बर्थ रे एति जिंस रहला नेक्स्ट देखियो बाय डिसेंट ता माने इंडिया रे से जन्म होई नथियो किंतु इंडिया को आसीबो को समय बिटवीन जनवरी 26 1950 टू डिसेंबर 10 1992 एई भितरे से जदि बॉर्न आउटसाइड इंडिया किनु से इंडिया को आसीबो रे एंड व्हाट कंडीशन कोन फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मान ता बापा इंडियन सिटीजन हेतिबो आउ ता सहित से 26 जनवरी 1950 टू डिसेंबर 10 1992 भितरे से इंडिया को आस्तियो माइग्रेट करके आस्तियो ताहाले जाकी से गोटे इंडियन सिटीजनशिप पाए पाए योग्य हो आफ्टर डिसेंबर 10 1992 पर either of his parents is a citizen जदि तारो बापा मां भीतर जदि के गोटे पेरेंट्स जदि सिटीजन हेतिवे ताहाले ताकू सिटीजनशिप मिल पारे तब 3rd डिसेंबर 2004 onwards 3rd डिसेंबर 2004 ता परठारु unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year of date of birth and with the permission of the central government after the expiry of the period ता माने जदि कोनसी गोटे छुआ जन्म होला ताहाल ताकू जदि इंडियन जेमि कह पारा इंडियन रजिस्टर ताकू जदि रजिस्टर करा हेतियो तार जन्म समय रे तार बर्थ समय रे रजिस्ट्रेशन करा हेतियो जो ए जिंस कंप्लीट डिफरेंट एटा रजिस्ट्रेशन हो जेटा जो बर्थ रजिस्ट्रेशन जोटे कि आशा अंगनबाड़ी एमान को द्वारा करा हेते ताकू जदि रजिस्टर्ड करा हेतियो बा तार जदि एक्सपायरी डेट एटा केते दिन भीतर करिया पड़े 1 ईयर भीतर करिया और जदि 1 ईयर भीतर जदि न करा होला ताहाले प्रियर परमिशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट माने स्टेट गवर्नमेंट रो किछि भी सिटीजनशिप रो भूमिका ना
ताले सेंट्रल गवर्नमेंट रो परमिशन मिलिबा पर जदी ताकू मिलिथो ताहाले ताकू हमें गोटे इंडियन सिटीजन भाव रे ताकू हमें डिक्लेयर करबा ताकू परमिट करा by registration. The central government may on an application register as a citizen of India any person not being an illegal migrant if he fulfills certain conditions such as persons must take an oath of allegiance before they are registered as citizen of India. তাহলে এମିତି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଯେ କାହାକୁ ଆଉ କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଦିଆଯିବ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛି ତାକୁ ସିଟିଜେନସିପ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିବ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦିଆହେଇଛି ସେଟା କେତେ ଦୂର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆଉ ସେଇ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ନୁହଁ ତ ତା ପାଖରେ ପ୍ରପର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି ତ ତା ସହିତ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଓଥ୍ କରାଯିବ ତାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶପଥ ପାଠ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରାଯିବ तर by naturalization देखो naturalization देखा the central government may on an application grant a certificate of naturalization तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करियो जो एप्लीकेशन देला पर से गोटे गोटे सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन दियो एनी पर्सन किंतु से लोकटा गोटे कंडीशन इलीगल माइग्रेंट जेबे हे नथि से इलीगल माइग्रेंट को छाडी के आ समस्त पर्सन जो माने अप्लाई कले सेंट्रल गवर्नमेंट जदी देखला ये पर्सन टा सुइटेबल टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप ताहले सेमानकर सर्टेन क्वालिफिकेशन इंडेक्स को देखिकी सेमानकर गोटे नेचुरलाइजेशन रो गोटे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जा पर से गोटे इंडियन सिटीजन हे जिवो तर by incorporation of territory if any foreign territory becomes a part of India the government of India specifies the person who among the people for example हम देखिबा जदी सिक्किम सिक्किम देखिबा 1974 रे ये गोटे एसोसिएटेड स्टेट रो मान्यता पाइला सिक्किम तापरे 1975 रो गोटे फुल फ्लेज्ड स्टेट हे गला इंडियन स्टेट जेतेबेले फुल फ्लेज्ड स्टेट हे गला तले जो सिक्किम रो जो लोक माने थिले सेमान को वर्तमान कोन करिवे सेमान तो सिक्किम गोटे इंडिया रो पार्ट हे गला तले सिक्किम रो लोक माने मध्ये कोन हेबे इंडियन सिटीजन पाइबे तनके इंडियन गवर्नमेंट सेही लोक मान को सिटीजनशिप प्रोवाइड करिवो तले ये तो थिला एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप तापर वर्तमान देखा लॉस ऑफ सिटीजन माने को ग्राउंड रे हमर सिटीजनशिप लॉस तो प्राय तीनटा ग्राउंड रे बाय रेनुंसिएशन सेकंड बाय टर्मिनेशन बाय डिप्राइवेशन ए तीनटा जिंस रे हुए प्रथम जिंस देखिया तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रेस्क्राइब्स थ्री वेज वेदर अक्वायर्ड बाय द एक्ट माने तीनटा कंडीशन में समान को सिटीजनशिप लॉस होता है प्रथम देखिया रेनुंसिएशन रेनुंसिएशन अर्थ होची जेमति कि आत्मत्याग बा जे कि निजे त्याग करिकि जीव हरि से देछि कोन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया of full age and capacity can make a declaration renouncing his Indian citizenship जने लोक जदि त्याग करदेला तार सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप ताहाले से लोकर कोन सिटीजनशिप लॉस हबो निज इच्छा रे upon the registration of that declaration that the person ceases to be a citizenship जदि से लोकटा निज इच्छा रे सो इच्छा रे डिक्लेयर कला ताहाले तार जो राइट थिला जो टू बी द citizen of India ताको सीध हे जे however such registration can be withheld if that declaration is made during a war in which India is engaged ताहले जदि कोन से लोक सपोज जने लोक मानकर अप्लाई कला निज इच्छा रे से निजे अप्लाई कला जे से रिनाउंस कला जे मु दैट आई वांट टू क्वाइट द इंडियन सिटीजनशिप इतले जदि जने लोक जदि इंडियन सिटीजनशिप जदि छाडिया पे चेष्टा करिवो ताल ताको को ग्राउंड रे बेले बेले ताको तारो एप्लीकेशन विथहेल्ड कराय पर जते बेले कि इंडिया कोन से वार रे एंगेज थियो जदि सपोज इंडिया कोन से वार रे एंगेज हे अछि ताले सेही समय रे जण जे लोक जदि अप्लाई करछ नाही दैट लिबरेट मी फ्रॉम द सिटीजनशिप इंडिया ताले सेही जगह रे के तारो विथहेल्ड करा जाय पारे तापरे एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन आल्सो लूजेस इंडियन सिटीजनशिप ताहले एमिति नहते केवल ताकू ही मिली जो सिटीजन सी ही निजे लूज कर देबो सिटीजनशिप सेमिति न तार जो माइनर चाइल्ड गुडा मध्ये थाନ୍ତି सेमानकर मध्ये सिटीजनशिप कटि जो तार छुआ गुडा माने ता बापा जदी इंडियन सिटीजनशिप जदी छाडी की पळौची निज इच्छा रे वॉलंटरली रिनाउंस कर दोची ताल ता चाइल्ड गुडा को मध्ये सिटीजनशिप मिलिबो नाही नेक्स्ट देखिबा
बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कौन देखिए, when an Indian citizen voluntarily acquire the citizenship of another country, माने टर्मिनेशन अर्थ होची ताकू टर्मिनेट करा हिजो, ताकू एबोलिश करा हिजो एज बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया। ताले से सपोज कौन सी गोटे लोक अछि से देखिला रे अमेरिका रे भलो फायदा होछ, ताकू भलो सुविधा मध्ये मिलुछ, तनु से तले अमेरिकन सिटीजनशिप एक्वायर कर देला, ताहाले से समय कोन करा जो ऑटोमेटिकली तारो इंडियन सिटीजनशिप को टर्मिनेट करा जो। तब ये हसला तापर जो देखो, दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग ए वार इन व्हिच इंडिया इज, एई समय कौन सी कंडीशन अप्लाई करा जो जदी से अन्य कौन सी गोटे कंट्री जदी सिटीजनशिप एक्वायर कर देला, ताले डेफिनेटली तार सिटीजनशिप डिप्राइव तार टर्मिनेट करा जो। तापर नेक्स्ट देखिए डिप्राइवेशन, इट इज द कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, माने सेंट्रल गवर्नमेंट एटा कंपल्सरी सମାନଙ୍କର सिटीजनशिप को बंद कर दो। केते बेଳ जदी जने लोक सिटीजनशिप पाइथियो बाय फ्रॉड, से जदी कोनसी लोक जदी फ्रॉड करिक मनकर भूल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करिक जदी से सिटीजनशिप पाइथियो, सोल डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जदी जने लोक जदी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिसलॉयल्टी शो कला, ताहाल मध्ये तार सिटीजनशिप मध्ये कैंसिल हे जेर चांसेस अछि। तर अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विथ द एनिमी ड्यूरिंग द वार, सपोज गोटे वार टाइम रे सपोज कौन सी देश सहित आमर वार होची, से समय से कंट्री को आमर किसी किसी कहि पारे आमे किसी प्राइवेसी जिनस गुडाक जदि से किसी हस्तांतर कला बा कौन से समय जदि जदि आमर एनिमी कंट्री किसी सहाय्य कला, ताहले तार जो सिटीजनशिप को डिप्राइव करा जाय। Within 5 years after registration or naturalization has been imprisoned in any country for 2 years, जदि जने जने लोक जदि एभला जदि गिल्टी जदि पाइले आमे, ताहाले तारो ताको आमे एटलीस्ट 2 years पर्यंत ताको आमे कोन करबे, ताको इम्प्रिजन करा जियर व्यवस्था मध्ये अछि। ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूअस, जदि आउटसाइड रहिथियो ताको ताहाले ताको 7 years पई मध्ये दिया जाय पारे। तापर देखबा सिंगल सिटीजनशिप, though the Indian constitution is federal and envisages a dual polity, both center and state, it provides for only a single citizenship like Canada, citizens way allegiance to the union, only to the union, माने इंडिया रे ए जो सिटीजनशिप ता प्रोवाइड करे इंडिया रे सिंगल सिटीजनशिप, ता माने इंडिया रो जदी कौन से गोटे लोक फील करछि नाइ मु उत्तर प्रदेश रो गोटे सिटीजन, सेमिति हे पारे उत्तर प्रदेश रो तू लोक हे पारु, किंतु सिटीजनशिप तो तते मिलियो केवल इंडियन सिटीजनशिप। अनलाइक यूएसए रे डुअल सिटीजनशिप मिले, देयर इज नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप, माने जो सेपरेट स्टेट मान पई कोनसी डिफरेंट सिटीजनशिप नै, जे कोनसी स्टेट रो तमे हो समस्त को इंडियन सिटीजनशिप ही मिलियो। से बला देछि किछि यूएसए और स्विट्जरलैंड रे मध्ये किछि डुअल सिटीजनशिप रहिछि। इन इंडिया ऑल सिटीजन्स एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, जे कोनसी स्टेट हो समस्त को सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मध्ये मिलछि। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन मेड बिटवीन देम, समान को कोनसी डिस्क्रिमिनेशन करा जिबार मध्ये कोनसी ग्राउंड ही नाही। हाउएवर द जनरल रूल ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज सब्जेक्ट टू द सम एक्सपेक्टेशंस अंडर आर्टिकल 15, 16 एंड 19। हाँ बेले बेले मध्ये किछि समय रे सेडको हमें कहि परियनि हमें एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जदि एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रही क्या अंडर रही आर्टिकल 15, 16 और 19। आर्टिकल 15 says that, आर्टिकल 15 कौन कहूँ देखिए, आर्टिकल 15 says that a state can provide special benefits or give preference to their residents in matters that do not come within the purview of the rights given by the constitution to Indian citizens। तो स्टेट में ऑफर कंसेशन इन फीस फॉर एजुकेशन, माने स्टेट चाहिले से किछि एजुकेशन आउ किछि मैटर कंसेशन दे पारे बा किछि स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पारे तार रेसिडेंट मानको, तार अर्थ नहीं जे से सिटीजनशिप को चेंज कर दो, सेमिति नुह। तापर आर्टिकल 16, द पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेसिडेंस विद इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन द स्टेट, माने गोटे पार्लियामेंट को कर पारे गोटे प्रेस्क्राइब कर पारे रेसिडेंट को विद इन ए स्टेट, जे कोन तार लोक को
एटा बेस्ट एग्जांपल देखिबा सपोज जने लोक आईएएस एग्जाम क्वालिफाई कला से गोटे आईएएस है ताले आईएएस सपोज से हरियाणा को बिलोंग करतला ताले हरियाणा रु जदी पास जदी से गोटे आईएएस है ता माने कोन से हरियाणा रे ही रही बोली माने अछि सेमी तो नुह से जे कोनसी स्टेट मध्ये जे कोनसी स्टेट को से निजर कैडर भाबे से तब चूज कर पारे तेणुकरी ये जगह कौन हम पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब कर रेसिडेंट मानक जेकोसी स्टेट से सर्विस एम्प्लॉयमेंट पाई Article 19 says that freedom of movement and residence is subjected to the protection of interest of any scheduled tribes. तामने एटी किछि स्पेशल गोटे ग्रुप अछि जेमि एसटी एसटी कम्युनिटी मानक पई किछि समान पई किछि स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स तक मध्ये दिया अछि राइट ऑफ आउटसाइडर्स टू एंटर रिसाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरियाज इज रेस्ट्रिक्टेड माने जो ट्राइबल एरिया गुडा थांदी जो आदिवासी लोक मानकर तांको जगह रे जागी जने जने आउटसाइडर जागी रही परियो नाही ए भला किछि प्रोविजंस मध्ये रही ये तो थिला हमें सिंगल सिटीजनशिप वर्तमान देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वर्तमान देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अनुसार कौन रही है डेफिनेशन ऑफ द इलीगल माइग्रेंट्स का कहबा तो जण को हम इलीगल माइग्रेंट केतेल कहबा ताले इट डिफाइन्स एन इलीगल माइग्रेंट एज ए फॉरेनर था गोटे फॉरेनर भाबे से डिक्लेयर करते हु एंटर्स इंडिया विदाउट ए वैलिड पासपोर्ट माने जणे लोक इंडिया को एंटर करछि विदाउट हैविंग ए वैलिड पासपोर्ट माने ता पाखरे कोन से वैलिड पासपोर्ट नथे ता सहित ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मध्ये नथियो और स्टे बियॉन्ड द परमिटेड टाइम और जदी भी मध्ये वैलिड पासपोर्ट थियो ताको सपोज 2 मंथ पई ताको परमिट कराई छि से आफ्टर 2 मंथ पर से ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हे जो एज एन इलीगल माइग्रेंट The Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, Christians from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan who entered India on before 31st December 2014 will not be treated as illegal migrants. ताले इलीगल माइग्रेंट्स रो टिके मध्ये परिभाषा चेंज करा हिची वर्तमान रो अमेंडमेंट अनुसार जोने हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी क्रिश्चियन एमाने एक्चुअली एमाने होचन कोन रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान बांग्लादेश एंड पाकिस्तान दीज आर द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज एमान ऊपर बहुत अत्याचार हुए तेनकर एमाने से कंट्री छाड़ी की समन ह्यूमैनिटी दृष्टि इंडिया रासी की रेफ्यूजीज भाबे रहले तले से माने जदी 31 डिसेंबर 2014 पूर्वरु आसिक इंडिया रहउछन ताहाले से माने इलीगल माइग्रेंट्स भाबे डिक्लेयर करा जबो नाही and the 11 years requirement will be reduced to the 5 years ताले जने सिटीजन हे पई जो 11 इयर्स दरकार थला रिक्वायरमेंट रहिबा पई ताले ताको 5 इयर्स को रिड्यूस करा नेक्स्ट देखिए these provisions on citizenship for legal migrants will not apply to the tribal areas of Assam Meghalaya Mizoram and Tripura ताले जो प्रोविजन गुडा को सिटीजनशिप माने ए जगह गुडा करे अप्लाई होन बिकॉज़ they are located in the 6th schedule of the Indian constitution. Further, it will not apply to the inner line areas notified under the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 applicable to Arunachal Pradesh, Mizoram. ताले ए जो प्रोविजन गुडा को मध्य ए एरिया गुडा अरुणाचल प्रदेश मिजोराम मणिपुर एंड नागालैंड ए गुडा करे मध्य applicable नुह वर्तमान जानिबा हमें कंपैरिजन बिटवीन एनआरआई PIO and OCI card holders. NRI means non-resident Indian. PIO means is a person of Indian origin. Overseas citizens of India. माने जो माने कि बाहरे रुहंती किंतु इंडियन सिटीजन जदि फॉरेन ने जाकी जने काम करछ ताल से मानको OCI कहबा. नॉन रेसिडेंट इंडियन से मानकर बाहर जाकी रही इंडियन पासपोर्ट धरी काम करछ ताल कहबा. ताले आउ जने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माने इंडियन ओरिजिन नथिला लाइक अन्य कंट्री रो जाकी से जदी सिटीजनशिप ने हेछि ताबे कोन कोन सब राइट्स सब रहिछि सब देखिबा होतो an Indian citizen who is ordinarily residing outside India and holds an Indian passport जदी जने लोक इंडियन पासपोर्ट धरि की गोटे फॉरेन कंट्री को जाकी से ऑर्डिनरली बाहर जाकी रहछि ताको हमें नॉन रेसिडेंट इंडियन कहबा किंतु इंडियन ओरिजिन के तो पर्सन हु आर हुज एंसेस्टर्स वर इंडियन and who is presently holding another country citizenship जंती जने लोक अन्य गोटे कंट्री रो सिटीजनशिप को एक्वायर कर देछि किंतु ता बापा मा इंडियन सिटीजन थिले ताहाले से गोटे फॉरेन पासपोर्ट डेफिनेटली गोटे रखिथिबो ताहाले ताको हम गोटे कहबा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया a person registered as an overseas citizen of India card holder under the citizenship act
से गोटे इंडियन होती बाहर जाकि माने रहउथिबा ताको कोन जगह मध्ये ताको पोस्टिंग कराइथो नॉन रेसिडेंट इंडियन ताको ऑल बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन माने इंडियन सिटीजन मानन पई जो राइट्स एमान पई मध्ये सेम राइट्स काई बिकॉज़ they are moving with Indian passports that means they are Indian से माने इंडियन तेनकरी से मानन को सब जगह राइट्स मध्ये मिलियो ए जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एमान पई कोन स्पेसिफिक बेनिफिट्स नाही एमान पई जे देखिया मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीसास फॉर विजिटिंग इंडिया एमान को जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जे देखिया एमान को लाइफ लॉन्ग वीसास मिलियो फॉर एनी पर्पस जे कोन समय किंतु एनी कि स्पेशल केस रे परमिशन मध्ये दरकार रिसर्च वर्क जदि करिया पे से इंडिया को आसे ताल से समय कि ताको परमिशन मध्ये दरकार जदि वीसा क्षेत्र देखियो माने को नो वीसा रिक्वायर्ड माने कोन वीसा दरकार वीसा इज रिक्वायर्ड माने वीसा विदाउट ए वीसा फॉर लाइफ लॉन्ग एमाने मध्ये इंडिया को आसे पारे फॉर लाइफ लॉन्ग जेतु समय लाइफ लॉन्ग वीसा मिलची तनु गोटे वीसा रे समय मध्ये आसे पारे बा समय वीसा मध्ये दरकार not required to register with the local police authorities in India एमान जतबेले इंडिया को आसीबा आसे समय रे इंडिया रे कोनसी पुलिस स्टेशन सहित रजिस्टर करिया आवश्यक नुह किंतु जदि जदि जने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ताले से डेफिनेटली आसी से कोन करबो जदि से 180 डेज पर जदि अधिक समय रे ताले से रजिस्टर करिया पड़े एमानु मध्ये नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विथ द लोकल पुलिस अथॉरिटी एमानु मध्ये दरकार नुह ओवरसीज सिटीजन मान तो जो देखिए नॉट रिक्वायर्ड ये तो जानले हमें ऑल एक्टिविटीज कैन बी अंडरटेकन से माने जे कोनसी एक्टिविटी चाहे इंडिया रे कंडक्ट कर बेरे से दरे कोनसी तांको रेस्ट्रिक्शन नाही एक्टिविटीज एज पर द टाइप ऑफ वीसा ऑब्टेन से माने जो प्रकार वीसा से माने ऑब्टेन करछन सेही प्रकार वीसा रो अकॉर्डिंगली से माने इंडिया रे काम करते माने कोन करबे माने सब एक्टिविटी कर पारे एक्सेप्ट रिसर्च वर्क इंडिया रिसर्च वर्क पई स्पेशल परमिशन दरकार सेही बाकी मिशन पई मध्ये पोस्ट पई से मध्ये किसी स्पेशल परमिशन दरकार आ बाकी सब जगह एक्टिविटीज मध्ये माने कंडक्ट कर पारे जदि देखिया सिटीजनशिप रो जदि पर्सपेक्टिव रे से माने गोटे ऑर्डिनरी सिटीजन भाबरे गोटे इंडियन सिटीजन तेनु करी से माने पई कोनोसी रेस्ट्रिक्शन नाही एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ही हैज टू बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया नहीं से बुझबल ने जदि से देखिबो से जदि रजिस्ट्रेशन करिया पे चाहिबो इंडिया रे सिटीजनशिप पे ताको एटलीस्ट 7 इयर्स रहबा को तो पड़ियो सिटीजनशिप 55 अनुसार गोटे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर से 5 वर्ष रहइबो विच ऑर्डिनरी रेसिडेंसी जदि रहिला ताहाले 12 months before making an application for the registration eligible to grant Indian citizenship पाइबा पई हेले ताको 5 वर्ष रहय पड़े इंडिया रे किंतु तार 12 months बिफोर माने 1 years बिफोर से मध्ये अप्लाई करि परिबो इंडियन सिटीजनशिप पाइबा एतिक थिला बेसिक डिफरेंस the cancellation of the registration of OCI card holders माने जो मानकु ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स जो माने मिल से केते बेले कराइ जिवो से केते टर्मिनेट कराइ जिवो से मानकर रजिस्ट्रेशन केते बेले कैंसिल कराइ जिवो से मान जदी इफ द OCI कार्ड हैज रजिस्टर्ड थ्रू फ्रॉड से माने जो फ्रॉड करी करथिए if within 5 years of registration 5 वर्ष रजिस्ट्रेशन कला परे the OCI has been sentenced to imprisonment for 2 years or more तार से माने इंडिया रे रजिस्ट्रेशन करियर 5 वर्ष भीतर जदी से मानको 2 years बा ता अधिक समय पे जदी imprisonment रहे ताल से मानकर कैंसलेशन करा जे OCI कार्ड if it becomes necessary in interest of sovereignty and security of India नहीं जदि इंडिया रो इंटरेस्ट और सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करे में जदि एमिति कि स्टेप नेबा पड़े सही जदि पर्सन ऊपर जदि कोनसी प्रकार चैलेंजेस देखा जाए ताहले मध्ये तार टर्मिनेट करे इफ द OCI हैज वायोलेटेड द प्रोविजंस एक्ट or any other law as notified by the central जदि सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ गुडा को प्रोवाइड करछन सेगुडा जदि वायोलेट हबो ताहले डेफिनेटली सेमानकर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा जिवो the order for cancellation of OCI should not be passed till the OCI card holder is given an opportunity to be yours तेनु सेमान को मध्य अपॉर्चुनिटी दिया जिवो सेमान को should not be passed till the OCI card holder opportunity माने सेमानकर कैंसलेशन करा जिवोनी से पर्यंत जो पर्यंत सेमानकर अपॉर्चुनिटी सेमान को प्रोवाइड करे जे सेमानकर मध्य सेमाने व्यू को रखिबे so this is enough for today
If you find this video helpful, kindly support our channel. Thank you. Jai Jagannath. Jai Hind.